Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri ma'am. आज के वीडियो में ARS नेट से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Which of the following reagent is useful for visualizing DNA? Options है uracil, DNA polymerase, diphenylamine and option D है Ethidium bromide. We'll go through each and every option individually to find the answer. Starting with first option, option A is a uracil. DNA and RNA are made up of purine and pyrimidines. So uracil is one of the pyrimidine base. This is present in RNA and in case of DNA there is a presence of thymine. तो स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है यूरेसिल का. यहाँ पर हम नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करते हैं. थाइमीन में यहाँ 5th पोजीशन पर मिथिल ग्रुप होता है, यूरासिल में वो नहीं होता है. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूरासिल एंड थाइमीन. बट यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए. यूरासिल इज नॉट यूज्ड फॉर द डीएनए लेबलिंग. सो लेट्स मूव टू अनदर ऑप्शन. ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज एक रेप्लिकेटिव एंजाइम है. डीएनए रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डीएनए रेप्लिकेट्स. जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तब डीएनए पॉलीमरेज आर 3. देयर आर 3 डीएनए पॉलीमरेज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. द डीएनए पॉलीमरेज 1 that is for DNA repair and gap filling. DNA polymerase 2 is there for DNA repair. DNA polymerase 3 is the main replicative enzyme in prokaryotes. When we discuss about eukaryotic cell, there are 6 DNA polymerases. Alpha is there for priming during replication. Beta is there for base excision repair. Gamma does DNA replication for mitochondrial DNA. Delta is for lagging strand synthesis, epsilon is for leading strand synthesis, and kappa is required for attachment of cohesin. So in this way, DNA polymerase is a replicative enzyme and it is not used for the labeling of DNA. So let's move to next option. ऑप्शन सी है डाइफेनिलमाइन. ये एक एनिलीन डेरिवेटिव है. जब डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट फॉर्म्स द बीटा हाइड्रोक्सी लेवोलिनाल्डिहाइड. व्हेन दिस रिएक्ट्स विद डीपीए डाइफेनिलमाइन इट गिव्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर प्यूरिन जो होते हैं, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं डीपीए के साथ, डीऑक्सीराइबोज ऑफ प्यूरिन. तो दिस इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए. इस रिएक्शन के बाद दिस ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स शोज एब्जॉर्बेंस एट 595 नैनोमीटर. So this DPA is used as a reagent. It is also used as a antioxidant. It is used as a dye mordant, and in agriculture it is used as a fungicide as well as anti-helminthic. तो इस तरह से डाइफेनिलमाइन हम यूज करते हैं इन द डिटेक्शन ऑफ डीएनए, मगर ये डीएनए के बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है. तो डीऑक्सीराइबोज जो होती है प्यूरिन की, वो इसके साथ रिएक्ट करती है जिससे ब्लू कलर आता है. सो लेट्स मूव टू लास्ट ऑप्शन. ओके, सो मूविंग टू लास्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी इज इथिडियम ब्रोमाइड. व्हेन वी परफॉर्म agarose gel electrophoresis of the DNA, after electrophoresis we soak the gel into the solution of Ethidium bromide. तो यहाँ क्या होता है, ये इथिडियम ब्रोमाइड
डीएनए के स्टैक्ड बेसिस के बीच में जाके बैठ जाता है. And when we observe the gel under the UV light at 260 to 300 nanometer, it fluoresces. It fluoresces in a orange color. तो इससे हमें डीएनए आइसोलेशन के बारे में पता चलता है. This is the intercalating reagent used for the detection of DNA. इसके अलावा हम एक्रिडीन ऑरेंज यूज कर सकते हैं, प्रोफ्लेविन भी यूज कर सकते हैं. इथिडियम ब्रोमाइड कार्सिनोजेनिक है, इसलिए इसके फ्यूम्स भी हमें लेने नहीं चाहिए जब भी हम लैब में काम करते हैं. So we have to be very careful while handling the ethidium bromide. So after discussing each option, we will say that the reagent used for visualizing DNA is Ethidium bromide. Option D is the correct answer for this question. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.